now I'm meeting the Cycling Federation Pakistan in person. अपना नाम बताएं. सैयद अजहर अली शाह. और आप गए थे एक इवेंट पे इन स्विट्जरलैंड, उसके बारे में बताएं. वर्ल्ड रोड चैंपियनशिप हुई थी स्विट्जरलैंड में, ज़्यूरिख में. हम वहाँ गए थे, वो इवेंट भी हो रहा था और साथ कांग्रेस मीटिंग थी वहाँ पे यूसीआई की, और वो मीटिंग भी हमने अटेंड की है. और मैं एशिया का वोटिंग डेलीगेट्स भी था और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे. उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी थी और फ्यूचर प्रोग्राम भी थे और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई. सुबह ये 9 बजे से शुरू हुई और ये 6 बजे तक ये मीटिंग जारी रही, जिसमें वक्फे भी हुए. तो उसके लिए खाने के लिए भी बड़ा अच्छा वो रहा. उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी. नेक्स्ट डे जो था नेशनल फेडरेशन के लिए था, सैलिडेरिटी प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन थी और रजिस्ट्रेशन थी. बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी जो है ना, हमारे साथ और कोलीग भी गए थे, जिसमें मेरा सेक्रेटरी हारून जनरल गया था और इंटरनेशनल डायरेक्टर हमारे साथ निसार भी था, जिन्होंने हमने काफ़ी चीज़ें हमने कंसीव की है वहाँ से. और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में जाके हम अपनी फेडरेशन में और लोगों और बच्चों के साथ जो है ना वो शेयर करेंगे. और ये जो यूसीआई इसको आगे कैसे लेके जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी साइकिलिंग है नहीं, और उसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे पाकिस्तान में? आपकी बात ठीक है, बहुत कम हमारे साइकिलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में. हमारे पास जो कोविड आया था, तो कोविड में यहाँ तक कि जितने भी स्टोरों में बाइक्स थी वो सारी बिक चुकी और कोई उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी बाइक हमारे पाकिस्तान में. राइडिंग की तरफ लोगों का शौक हो गया, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में ये राइड करते होते हैं. संडे राइड होती है, इससे मेल फीमेल्स होते हैं, ऑल बच्चे आ जाते हैं, हर एज के लोग उसमें शामिल होते हैं. इसके साथ साथ हम जो है ना रोड इवेंट्स करवाते हैं अंडर द यूसीआई जो है उसकी रूल रेगुलेशन के तहत, तो उसमें भी लोग हमारे साथ शिरकत करते हैं. I am now with the President of the Cycling Federation of Pakistan. Please, can you start by telling me your name? Syed Azhar Ali Shah. You went to an event in Switzerland. Can you tell us more about that? It was the World Road Cycling Championships in Zurich, Switzerland. We went there and there was also a Congress meeting hosted by UCI. I also attended the meeting. I was the voting delegate of Azhar as well. There were lots of things going on. The meeting for the amendments to the Constitution, the discussion about future programs, and we discussed so many things. The meeting was from 9 a.m. until 6 p.m. There were 2 breaks and food was served as part of the UCI meeting. There was my colleagues who went with me, including my secretary and national director was also with me. We conceived quite a lot of information and we will go back to Pakistan and share this with our federation. How are you going to take this federation forward, because there's not much cycling in Pakistan? You are right, we have very few cyclists in Pakistan. When COVID struck Pakistan, all the bikes had been sold. There were no bikes available for sale in the stores. No bikes were available in the whole of Pakistan. As a result, we then came across this interest in cycling in Islamabad, Karachi and Lahore. And in Peshawar, there is a Sunday cycling ride. There are males and females involved, and children from all age groups take part in the cycling ride. We organise road races under the official rules and regulations. People participate in these road races. और ये सिर्फ रोड ट्रिप है या द फास्ट ट्रिप्स भी कर सकते हैं, लाइक शॉर्टर डिस्टेंस?
शॉर्ट डिस्टेंस तो हम ही करते हैं यूसीआई के रेगुलेशन के तहत, उसमें जितनी उनकी शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं वो भी करते हैं, और सर्किट रेसेस करवाते हैं 1 दिन की 2 दिन की, उसमें मुख्तलिफ माइलेज की होती है किलोमीटर्स की, और उसमें लड़के लड़कियां जूनियर्स अंडर 23 ये जो है ना शिरकत करते हैं। हम जो अभी जा रहे हैं, और चूँकि पैरा जो है साइकिलिंग इस दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के साथ हुई है, एशिया में भी होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि पैरा को भी आगे लेके आएँ, उनके जो बच्चे हैं उनको भी हम ये जो है ना साइकिलिंग की तरफ राग़ब करें। अगर किसी ने पैरा में जाना है, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उसका क्या process है? For example, like if I want to represent Pakistan or if I want to represent their own country, उसका process क्या है? प्रोसेस ये है कि जो वो भी साइकिलिंग में आएगा, चाहे वो एक हेल्पर है या टीम असिस्टेंट है, मैनेजर है, कोच है, प्लेयर है, और प्लेयरों में कैटेगरीज है, लीड है, अंडर 23 है, मास्टर्स डिग्री के लेवल्स के हैं, वो सब जो है ना लाइसेंस बनाएंगे। लाइसेंस जब बनाएंगे तो उसके बाद सिलेक्शंस पे आते हैं हम कि जी हम ने एक इवेंट करवाना है, और वो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो पंजाब से हैं तो पंजाब की टीम से करेंगे, कि पीके की है या सिंध की है तो वो अपने सूबे की साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। जब उसमें बेस्ट रिजल्ट आ जाता है तो वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना हमारे पास आ जाता है, उसके बाद फिर हमने जहाँ भी टीम जानी हो और वो सेलेक्टेड लोगों को हम फिर कॉल करते हैं और उनमें ट्रायल करवा के वो टीम में जाते हैं फिर। और वो B1 और ब्लाइंड होते हैं, उसकी कैटेगरी भी होती है? हाँ, ये पैरा में मैंने कहा ना शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह हम जाएंगे तो ये जितनी कैटेगरीज आप कह रहे हैं ना ब्लाइंड्स के जो स्टैंडर्ड है वो पूरे वही होंगे जो वर्ल्ड में चलते हैं, उसी किताब जो है ना उसकी सर्टिफिकेशन आएगी, एक डॉक्टर भी होंगे और उसको बाकायदा उसका थॉरली हम चेक करके ना उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। Are these road races only long distance, or are they conducted over shorter distances as well? We conduct short distance races under the UCI regulations, and we cover circuit races as well as over 1 day or 2 days. The mileage is different each day. In these races, boys and girls and under 23s participate. The Paralympics are coming soon, and we are trying to take some cyclists to the Paralympic Games as well. What's the process of representing Pakistan if anyone wants to do so from abroad? Let's say I want to represent Pakistan. What's the process? Process is whether you are a volunteer, a chief assistant, a coach, whether they are a player. There are many different categories as players in levels, masters, under 23. They will produce a license whether they are from whichever district, and then they go into representing their districts, provincial level. Are there any chances of people with a disability representing Pakistan in the future? As I've told you, we are making strides towards getting cyclists involved and entering them into the Paralympics. As soon as we can get all these formalities discussed and arranged, we can talk about cycling representation for Pakistan. और ये जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं, ये साइकिलिस्ट जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने पैसों से जाते हैं या फेडरेशन को फंड करती है इनकी सारी रिहाइश और फ्लाइट्स और अकोमोडेशन एवरीथिंग? आज से कोई 4-5 साल पहले जो था इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो फेडरेशन बेयर करती थी, और उसको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है ना सपोर्ट देता था, और वो एक्सपेंडिचर शेयर होता था उसके साथ। लेकिन कुछ सालों से चूँकि पाकिस्तान की इकनॉमिक्स जो है पोजीशन बहुत चली गई है नीचे, जिसकी वजह से वो फंडिंग जैसे पहले करते थे उस तरह नहीं करते। फेडरेशन के पास स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है ना क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं, और पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई स्पॉन्सर किसी नेशनल फेडरेशन के साथ बहुत कम
कम आता है, अगर आए भी तो वो टाइमली आता है। उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को, और हम बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हैं और अफोर्ड करते हैं, तो हम उनको जो है ना क्या नाम है कहते हैं कि अपना टिकट भी खरीद लें, और कोशिश करते हैं कि उनको जितनी भी फैसिलिटेट कर सकें हम उनको करते रहते हैं उस साइड पे। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में ये ग्रो होगी ऐसा ऐसा। आपको देखा कि जिस तरह GB ने कितने मेडल दिए थे साइकिलिंग में, इंशाल्लाह वन डे कोई पाकिस्तान भी करेगा ऐसी, और उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। आपको लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी कहता है कि मुझे मुफ्त की सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन आपने ब्रिटिश में देखा होगा कि जितने भी क्लब्स हैं या कोई यहाँ पे ट्रेनिंग्स क्लब हैं, तो लोग पे करते हैं उनको, कोचिज़ को, क्लब को, उनके टाइमिंग को पे करते हैं, तो उसके बाद उनकी एफिशिएंसी ऊपर आती है। तो इंडिविजुअली लोग यहाँ पे एक दूसरे को स्पॉन्सर भी ले लेते हैं। जब लड़के की परफॉर्मेंस आती है तो बड़े क्लब्स उनको हाथ डाल देते हैं, और वो क्लब जो है ना वो बच्चों को आगे लेके आते हैं। पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उल्टा काम है, हमें खुद बच्चों को लेके आना पड़ता है, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, और जो वो फैसिलिटीज़ वो यहाँ जो वर्ल्ड में मिलती है, ब्रिटिश में ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया में ले लें, तो वो फैसिलिटीज़ हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बच्चों को 3-4 साल की प्लानिंग के नीचे रखें जूनियर्स को, तो हमारा जो है ना रिजल्ट आ सकता है। Does all the flight and accommodation costs come from the players or from the federation itself? 4 or 5 years ago, the federation would carry the entire responsibility of the expenditure of the travel. The Pakistan Sports Board would support this, and the expenditure was shared with the Pakistan Sports Board. However, due to the economic status of Pakistan falling in the last few years, that's why they don't help fund to support the structure of Pakistan sports to flourish. The federation does not have enough sponsorship deals because everybody follows the cricket, with the exception of the cricket. Support for any other sports is lacking within Pakistan. We do try to encourage our fans to purchase tickets and help endorse our sports in Pakistan. There are many people who can afford tickets, and we request those people to continue to offer their support to our sports comprehensively, to the growth and development of sports throughout Pakistan. Going forward, as you will have seen how Team GB have developed cyclists and won Olympic medals over the years, do you think Pakistan will ever follow that example set by Team GB? Will the government support come to the saviour of cycling? The problem with Pakistan is that everyone is looking to attain everything free of charge. However, you will have seen that here in the UK, all the training clubs and cycling clubs, people are investing into initiative of sports. They pay the coaches for their time and develop cycling into something substantial. They pay for whatever the incurring costs may be, and sport thrives on investment from the people, their income ploughed back into sport. Not only cycling, but in the case of all sports. This is how we should create a mechanism to help sports flourish and develop into something bigger. This is the perpetual process. That's the ideal structure model for any sport. When children perform well and the federation is awarding those participants medals, that is what is so rewarding about having a perfect structure. Everything functions in synchronization, and there is a constant flow
to the success of sports. In Pakistan, it's the complete opposite. We need to go and bring the children to training and train them ourselves. The facilities they have in the UK and in Australia don't have those facilities in Pakistan, and this comes down to a lack of financial investment by the public ploughed into sports. There is one way, if we can sustain a devised plan of getting people under consistent training of over a 4 to 5 year period, then at least we are in with a chance of competing for medals. आगे जाके आप कहते हैं आप अब कोई और किसी चीज़ में आप काम का आप अब रिटायर हो गए और आप किसी और चीज़ में अब सोच रहे हैं करने के लिए अपना काम। बात ये है कि मैं आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और मैं रिटायर तो हो गया हूँ, लेकिन चूंकि मैं वहाँ भी मेंटेनेंस और सब कुछ देखता था, तो दिस इज़ प्रोफेशनल जो मेरा है वो उसका है कंस्ट्रक्शन का, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम जो है ना कंस्ट्रक्शन का प्राइवेटली स्टार्ट कर दूँ। या वो स्टार्ट जो स्विंग में हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, मैं फीड भी करूँगा, बच्चों को लेके भी जाऊँगा। और आप क्या एडवाइस देंगे बच्चों को कि जो जिनको शौक है साइकिलिंग का, उनको आप क्या कहेंगे कि कैसे करें अपनी कंट्री के लिए? साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक गेम है, और इसमें यह कि आदमी फिट रहता है। अगर वो इवेंट्स में नहीं करते, लेकिन कैजुअली वो तो घर से निकल के मार्केट जाना, स्कूल जाना या दफातर जाना, तो ये बेहतर है। और आजकल ये पैशन बनता जा रहा है, और हम वो पैशन की जो हवा है पाकिस्तान की तरफ भी आ गई है। इस्लामाबाद में रोड के ऊपर साइकिलिंग ट्रैक बन चुके हैं, लाहौर में भी बन चुके हैं, और दूसरे शहरों में भी साइकिलिंग ट्रैक बन रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि आइंदा फ्यूचर में लोग जो है ना काफ़ी ये साइकिलिंग को अपनाएंगे। इसमें एक ये मसला है कि एक साइकिल ख़रीदनी होगी आपको, और उसके बाद जो है ना खुद ही इसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू कर दें, तो इसमें सीरियस कोच की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना कोई ऐसी, और रेगुलरली आदमी घर से जब ट्रेनिंग करता है तो हम प्रोफेशनल जब उसको टच देंगे तो वो बच्चा आगे चला जाए। साइकिलें मुख्तलिफ किस्म की है, एक तो सेकंड हैंड्स आती हैं, लाख सवा लाख तक मिल जाती है, 1.5 लाख तक। इसके अलावा अगर ब्रांडेड चीज़ अच्छी लें और एरोडायनेमिक बाइक आप खरीदें तो 20 से 25 लाख रुपए की आती है। बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का फेसबुक पे पेज है, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे नंबर मौजूद हैं, आप कांटेक्ट करें, आपको रिस्पॉन्स मिले। You are retired from your job. Further on into the future, what are your plans moving forward? I am retired from working at the State Bank of Pakistan as an executive engineer. I was responsible for looking after and observing maintenance. I was in the construction business. My plans are to start my own construction business. Once it's underway, I will take the responsibility of managing the children, taking them out as well wherever I go. For the children who are looking for the first time an opportunity to take on cycling, what would be your advice to those young people emerging as new cycling talent? Cycling is such a great sport. In this, person can stay fit and healthy. If they are not taking part in any major events, they are casual cyclists just going outdoors to markets or cycling to school. This is a passion and it has reached us through the air in Pakistan. In Islamabad, cycling tracks have been constructed on the roads. In Lahore they have been constructed, and in other areas as well there are cycling tracks. It seems as though in the future people will adapt to cycling. You will only need to purchase a cycle once. With one purchase you will not need a coach, but if you want to become a professional cyclist, we will oblige to provide full
training and the person will advance. If you want to purchase a bike second hand, this will cost around 100,000, 125,000 to 150,000 rupees. If you are looking for something branded or something aerodynamic, this will cost 200,000 rupees to 250,000 rupees.